Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the second part of my lecture about educational services of Sir Syed Ahmad Khan. तो Sir Syed Ahmad Khan ने क्या किया? I'll revise it. 1859 में मुरादाबाद में एक मदरसा बनाया. देखें ज़रा, 1863 में गाज़ीपुर में स्कूल कायम कर दिया, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की और 1866 में जर्नल निकाला जिसका नाम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट था. तो देखें 59, 63, 64 और 66 में कितनी कामयाबियां उन्होंने हासिल की मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, मुसलमानों की वेलफेयर के लिए. Sir Syed Ahmad Khan went to England in 1869 with his son Syed Muhammad. 1869 में वो इंग्लैंड गए अपने बेटे के साथ जिनका नाम सैयद मोहम्मद था. who was given a scholarship for higher studies in England, जिन्होंने स्कॉलरशिप हासिल किया था और इंग्लैंड में आला तालीम हासिल करने के लिए गए. तो सर सैयद अहमद खान डिसाइडेड कि वो उनके साथ जाएंगे. ड्यूरिंग हिज 2 years stay in England, सर सैयद क्लोजली वॉच्ड द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ ब्रिटेन. तो उन्होंने बरतानिया के निज़ाम तालीम का बगौर मुतालिया किया. He was extremely impressed by the educational system of Cambridge and Oxford Universities of London, England. वो इंग्लैंड की ऑक्सफर्ड और ये दोनों जो यूनिवर्सिटीज़ थीं, कैम्ब्रिज और ऑक्सफर्ड, इनके निज़ाम तालीम से, वे एजुकेशन से बहुत इम्प्रेस हुए. एंड he made up his mind to set up an educational institution on the pattern of Oxford and Cambridge universities when he returned back to India. और कितना बड़ा डिसीजन लेकर आए, कितना बड़ा चैलेंज लेकर आए कि इंडिया में जाके मैंने भी इसी लेवल के जो तालीमी इदारे हैं वो बनाने हैं. सर सैयद अहमद ख़ान इंडिया से बहुत मोहब्बत करते थे. सर सैयद returned from England in 1870 and set up a body as अंजमने तारके मुसलमानान हिंद with an objective to imparting modern knowledge to the Muslims of India. देखें, ये भी इन्होंने एक अंजमन बनाई जिसका मतलब मुसलमानों को मॉडर्न नॉलेज देना था. यानी जिसमें आप ये देखें कि जो हमारी मुगलिया दौर के बादशाह थे वो भी इसमें बहुत पीछे रहे थे. अगर वो ऐसा ना करते तो हमेशा के लिए मुसलमानों की इस खित्ते पर हुक्मरानी होनी थी. नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़. ये बहुत बड़ी एक कामयाबी थी सर सैयद अहमद ख़ान के लिए कि उन्होंने MA कॉलेज कायम किया 1877 में. ये एक मोनूमेंट की हैसियत रखता है जिससे सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने तमाम जो तालीमी ख्वाब थे वो पूरे किए थे. यानी सर सैयद अहमद ख़ान विद रिगार्ड टू द एजुकेशनल सर्विसेज फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट देखें कि ऑन 24 मई 1874 MAO हाई स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड एट अलीगढ़ वेयर मॉडर्न एंड ईस्टर्न एजुकेशन वाज गिवन. मशरकी तालीम भी दी जाती थी और मॉडर्न यूरोपियन ब्रिटिश एजुकेशन भी सारी इनको सिखाई जाती थी. सर सैयद वर्कड डिलीजेंटली टू रेज दी स्कूल टू कॉलेज लेवल. उनकी ख्वाहिश थी कि ये जो मैंने स्कूल बनाया है ये कॉलेज का दर्जा इनको मिले. तो फिर इन 1877 द स्कूल वाज अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ अ कॉलेज एंड वाज इनॉग्रेटेड बाय लॉर्ड लिंटन विच वाज हिज बेस्ट फ्रेंड. It was a residential campus and offered both western and eastern learnings. दोनों तरह की learnings जो थी इसमें दी जाती थी. Islamic education was also given to the students. The college was open for the both Muslim and non-Muslim students who came from all parts of the country. दुनिया यानी कि मुल्क के किसी तमाम हिस्सों से लोग इसमें आते थे और इल्म हासिल करते थे. सर सैयद अहमद खान desired to see the college raised to the level of a university, which was fulfilled after his death in 1920. Sir Syed Ahmad Khan was died in 1898. 1898 में उनकी डेथ हुई और ये देखिए उनका ये ख्वाब पूरा हुआ. और ये जो कॉलेज था it got the status of university in 1920 when the college grew into the Aligarh Muslim University. The name of the university is Aligarh Muslim University. Next the famous and very important educational service of Sir Syed Ahmad Khan was the foundation of Mohammedan Educational Conference.
اسٹوڈنٹس یہ وہ پلیٹ فارم ہے، یعنی یہ وہ کانفرنس ہے جس سے آگے چل کے اسی پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے جو لیڈرز تھے انہوں نے مسلم لیگ بنائی تھی. تو اس کو غور سے آپ ذرا سنیں کہ سر سید احمد خان سیٹ دی مسلم ایجوکیشنل کانفرنس ان 1866، 1886 میں. اس سے پہلے 1885 میں جو انڈینز تھے، ہندو تھے، انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا لی تھی، اور سر سید احمد خان کو بھی بڑی فکر تھی کہ مسلمانوں کا بھی کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم ہونا چاہیے، لیکن شروع میں یہ ایک ایکڈیمک پلیٹ فارم تھا. دی کانفرنس ہیلڈ پبلک میٹنگز ان ویریس پارٹس آف دی کنٹری. اٹ اسٹیبلشڈ اٹس سب کمیٹی ان آل پارٹس آف دا کنٹری، یعنی اس نے اپنی شاخیں پورے ملک میں قائم کر دی تھیں. دس کانفرنس rendered valuable services in cultivating the spirit of action and self-help among the Muslims. یعنی مسلمانوں کے درمیان سیلف ہیلپ جو ہے اس کو، یعنی اپنا کام خود کرنا، اس کو کریٹ کیا جائے. تو اس پلیٹ فارم سے یا اس کانفرنس میں بڑے بڑے اس دور کے علماء جو تھے اور بڑے بڑے لیڈر جو تھے وہ یہاں آ کے بیٹھتے تھے، اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے مفاد کے لیے کام کیسے کرنا ہے، ان کی بیٹرمنٹ کس میں ممکن ہے. تو سم آف دیم واز ویری ایمیننٹ اسکالرس اینڈ لیڈرس ور انکلوڈیڈ in the conference with their dedicated approach aroused hope among their brethren. یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر انہوں نے یہ جذبہ موٹیویٹ کیا. اور دیور نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، مولانا شبلی اینڈ مولانا حالی، یہ سارے ارکان خمسہ میں آتے ہیں. who inspired the people with their spiritual, academic and political sentiments and development and insight.